Welcome to my channel, and thank you for listening to this podcast. Because आप आ चुके हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे एंड आई एम श्योर अबाउट दैट बिकॉज मेरे गेस्ट जो आते हैं वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देके जाते हैं जो एकदम माइंड पे हिट करती है. तो आज के जो गेस्ट हैं वो फुटबॉल रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं. आकाश खरे, जो कि अभी स्कॉटलैंड में रह रहे हैं. उन्होंने अपनी जॉब मुंबई से स्टार्ट की थी. ही वॉज बोर्न इन यूपी बट नाउ यू कैन सी ही इज़ इन स्कॉटलैंड. और उनको फुटबॉल के बारे में हर तरफ से नॉलेज है. तो let's hear out from Akash Khare and have some valuable conversation with him. Hi Akash, how are you? Hey Abhishek, I'm good. How are you? I am good. It's been a Long long time no see, time. man. Yeah, Exactly, long absolutely, time no see. absolutely. But Yeah. yeah, I remember हमने पीजी में काफी अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं. 3 महीने तक हम साथ में रहे Mm, हैं. I've learned a lot from you mm, definitely. So how's life in thank you. Scotland? I mean, आप मुंबई से आपने स्टार्ट किया था अपना कॉर्पोरेट जर्नी, फिर पुणे and now you're in Scotland. So how is life over there? Mm. Yeah, life in Scotland is definitely a lot more different than it was in Pune. Some things they are quite nice, and other Hmm. things I definitely do miss about India. Hmm. Yeah, the खाना बहुत मिस करता हूँ. मतलब इंडिया का खाना, मतलब नहीं यार, इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत हैं यहाँ पे, बट दैट टेस्ट इज नॉट देयर. तो Hmm. दैट इज डेफिनेटली वन थिंग आई मिस बिग टाइम. बहुत सारे फ्रेंड्स यार, अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इंडिया में हैं, पुणे में हैं, दिल्ली एनसीआर साइड पर हैं. तो डेफिनेटली मिस देम. हम लोग तो साथ में रहे हैं, तो यू नो, मतलब काइंड ऑफ वेरी सोशल गाय, Hmm. like having good conversations with friends over a couple of beers and all that. So I definitely miss that. यहाँ पे भी friends हैं, but आप कॉलेज, स्कूल, और उस समय के जो फ्रेंड्स होते हैं, उनकी जो दोस्ती होती है यार, वो अलग ही लेवल की अलग ही होती है. लेवल तो की होती है. कॉर्पोरेट में आकर के यू क्रिएट फ्रेंड्स, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग. Hmm. You must know about it. I You're working in understand. corporate life Totally as well. understand. So yeah, so it's like that. Okay. You tell, how is it going in Pune for you? Is it all good? It is good. It is good. I love Pune city. I mean, यहाँ पे सब कुछ है तो Mm-hmm. मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता. और लकीली फॉर्चुनेटली मेरे फ्रेंड्स जो भोपाल में स्कूल फ्रेंड्स थे वो सब इधर ही शिफ्ट हो गए हैं. तो Mm-hmm. मेरा पुणे में Oh, ओवरऑल wonderful, सेटलमेंट yeah. ही चल रहा है. तो या इट्स गुड हियर. Wonderful, wonderful. Really lucky, yaar. I'm really lucky. सीरियसली. ओके. मुझे पता है शुरू से जब मैं आपके साथ पीजी में था तो यू वर Mm-hmm. फुटबॉल एंथुसियास्ट. यू स्टिल आर. सो लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल. आपने फुटबॉल कब से देखना चालू किया था? Yeah, that's a very interesting story. मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था 2002 से. So Ooh. 2002, I remember I was like, what must have been 12-13 साल का था मैं. And the Hmm. World Cup was happening in South Korea and Japan. Football World Cup. Before that, I had not seen football. मुझे ज्यादा फुटबॉल भी नहीं था. क्रिकेट देखता था मैं, Hmm. लाइक ऑल किड्स इन इंडिया. बट समर वेकेशंस के टाइम पे रहते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप मोस्टली. अब इस बार वाला कतर वाला, इट हैपेंड इन विंटर्स. Hmm. बट जनरली फुटबॉल वर्ल्ड कप दे हैपन ड्यूरिंग आवर समर हॉलीडेज. Okay. तो खाली था. Hmm. दिस वर्ल्ड कप कमिंग ऑन, और क्योंकि एशिया में हो रहा था तो बहुत ज्यादा उसका, मतलब इंडिया में भी इट वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मीडिया कवरेज. Hmm. So I started watching it, and I fell in love with it. Hmm. बहुत मजा आया. मतलब लाइक पेस ही ऐसा लगा कि यार, मतलब कि क्या देख रहे हैं. पेस ही अलग थी एकदम गेम की, एंड इट वाज सो फास्ट एंड इट वाज सो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, पैशन एंड एवरीथिंग. तो वो वर्ल्ड कप हो गया उसके बाद में, एंड देन सेफ टू से आई गॉट हुक्ड. आई जस्ट गॉट hooked into football. Okay. And then अब फिर उसके बाद, अब all of a sudden the World Cup got over and there was no football to watch. I'm like, I did not know कि यार अब फुटबॉल कहाँ से देखें. तो I had a few elder cousins, तो वो थोड़ा बहुत देखते थे. तो I got in touch with them. Like I was kind of, it was like, I remember it was like kind of a drug कि यार अब तो आदत लग गई है इसको देखने की. अब मतलब आगे कहाँ से देखें, व्हाट नेक्स्ट. तो मैंने फिर भैया लोग थे उनसे पूछा, तो दे टोल्ड मी कि स्टार स्पोर्ट्स पर एक फुटबॉल आता है. इट्स कॉल्ड इंग्लिश प्रीमियर लीग. वही फुटबॉल आता है इंडिया Okay. में.
तो अगर तुमको देखना है तो वही अच्छा फुटबॉल है, यू कैन वॉच दैट. एंड वन मोर थिंग आई क्वाइट इंटरेस्टिंग, यार डेविड बेकहम से आई एम श्योर एवरी किड, हम लोगों की जनरेशन के, इनफैक्ट आज की जनरेशन के भी यार, मतलब डेविड बेकहम इज लाइक समथिंग एल्स. तो उस हम्म. समय डेविड बेकहम वाज इन हिज फॉर्म, मतलब फुटबॉल वाइज, स्टाइल वाइज. तो मतलब आई रिमेम्बर ही हैड दोज बिग स्पाइक हेयर्स एंड ऑल दैट. So, after the World Cup, I went to my hairdresser, the one that he used to, like, यार ना मेरे डेविड बेकहम ऐसे बाल काट दो. एंड लाइक ये who is this guy, डेविड बेकहम कौन है? तो फिर मतलब वो तो इट वाज लाइक अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्रेज. तो फिर जब मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया, तो डेविड बेकहम यूज्ड टू प्ले फॉर दिस क्लब कॉल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड. हाँ. तो ना मुझे यार पता था ना कुछ पता था, आई वाज जस्ट, मुझे कुछ प्लेयर्स के नाम पता थे जो मुझे अच्छे लगे थे उस वर्ल्ड कप में, एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग दोज प्लेयर्स. हम्म. फिर वहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखना शुरू किया, इन जनरल फुटबॉल देखनी शुरू की, मैनचेस्टर यूनाइटेड पसंद आ गई. तो आई जस्ट फेल इन लव विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दैट लव स्टोरी स्टिल इज गोइंग स्ट्रांग. सो हम्म. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वाचिंग इट. ओके. ओके. और आपने कहा कि इमोशनली कनेक्ट भी हुए आप कहीं ना कहीं, और मैंने बहुत देखा बिकॉज इट्स द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, और बहुत कंट्रीज के एब्सोल्युटली. पीपल वॉच द गेम. सो बहुत हम्म. ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है. व्हाई इज दैट? मतलब इंडिया में ऑफ कोर्स आप क्रिकेट से कनेक्टेड हो, बट फुटबॉल से बहुत सारी कंट्रीज कनेक्टेड है, वो भी इमोशनली. सो व्हाई इज दैट? यार फुटबॉल, मतलब फुटबॉल से इमोशनली कनेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट ओके. अगर मुझे टॉप 3 रीजंस बोलने हो तो हम्म. मैंने देखो यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, जो मतलब मैं यहाँ पे काफी सारे गेम्स पे गया हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखने. इनफैक्ट स्कॉटलैंड के भी, मतलब जो नेशनल गेम्स होते हैं उनको भी मैंने काफी सारे गेम्स देखे हैं. तो मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैं वो तुमको बताता हूँ. ओके. यार फर्स्ट ऑफ ऑल फुटबॉल ना, इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ वेरी पैशनेट स्पोर्ट. हम्म. मतलब आप अगर देखते हो, योर टीम इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, एंड इफ योर टीम इज पुटिंग इन ऑल द एफर्ट, है ना, वो दे आर मेकिंग, वो फाइट मार रहे हैं, अगर आपकी टीम, जिस टीम को आप सपोर्ट करते हो, इफ दे आर गिविंग इट देयर ऑल, हम्म. नो यू कैन एक्चुअली सेंस इट. आप राइट. क्राउड में बैठे हो, यू कैन एक्चुअली सेंस कि यार वो जो 11 प्लेयर हैं जिनको आप सपोर्ट करने वहां पे गए हो, दे आर गिविंग इट देयर ऑल. सो दैट बहुत बेसिक इमोशनल लेवल पे आपको कनेक्ट हो जाता है कि नहीं यार, जिसको मैं सपोर्ट करने गया हूं, दे आर गिविंग इट देयर ऑल. तो दे हम्म. आर पुटिंग इट, लीविंग इट ऑल आउट देयर. तो वो एक बहुत बेसिक एक इमोशनल लेवल पर आपके साथ आता है कि नहीं यार, आई हैव टू सपोर्ट देम बिकॉज दे राइट. आर गिविंग इट देयर ऑल. और अगर वो नहीं भी दे रहे होते ना, लाइक इफ देयर आर सिचुएशंस वेयर द प्लेयर्स आर नॉट गिविंग देयर ऑल, एंड दैट आल्सो गेट्स रेसिप्रोकेटेड इन द क्राउड, एंड देन द क्राउड रिएक्ट्स नेगेटिवली एज वेल. बहुत सारे मैचेस में मैंने देखा है कि द प्लेयर्स यू फील सिटिंग इन द क्राउड दैट दे आर नॉट गिविंग देयर ऑल, or हम्म. then the crowd reacts that way. I have seen teams getting booed off at half time or at full time because the crowd feels कि उन्होंने अपना सब कुछ नहीं दिया. हम्म. हम्म. तो एक वो बहुत बेसिक लेवल पर यू फील इट, यू फील द एनर्जी, जो वाइब होता है ना, यू फील द हम्म. वाइब्स. वो एक होता है. सेकेंड यार, जो मुझे लगता है ना कि इट इज अ स्केप, मतलब यहाँ पे या कहीं पे भी, मतलब हम लोगों की डेली लाइफ में यार देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, नॉट, मतलब आई ट्रू. एम, इट्स वेरी सेफ टू से कि राइट. किसी की भी राइट. लाइफ ना आजकल यार परफेक्ट तो नहीं. करेक्ट. मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है. एवरीबडी इज एब्सोल्युटली. फेसिंग सम इशू और द अदर. राइट. तो आप फुटबॉल देखते हो ना, तो फॉर दोज 90 मिनट्स it's like कि nothing else matters. For those हम्म. 90 minutes, it's only you and the team that you support. आपके जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज you're battling in life, you can set them aside for those 90 minutes and you can just focus on this. And I have a very personal story to share as well, yeah, ओके. on that. So in 2016, my father passed away, ओके. and it's a very difficult time in my life, obviously. और तो मुझे याद है कि यार, एंड एंड अभी तो काफी टाइम हो गया, तो आई फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट एज वेल, बट यू आर नेवर प्रिपेयर्ड इन लाइफ फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो राइट. मुझे याद है कि बहुत सारे टेंशन इश्यूज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग दैट कम्स अलोंग विद सच एन इवेंट. राइट. तो
आदमी ना, मैं, you know me, I'm very chirpy, I'm very social kind of a guy. But वो Correct. situation में I just kind of gone into a shell, और एकदम बहुत रिक्लूसिव आप हो जाते हो. तो Right, मुझे याद right. है कि बहुत बहुत टाइम हो गया था, 18-20 दिन हो गए थे, and I hadn't even, I was like within myself and all that. And then there was this Manchester United game that was going on, and for the first time in about 3 weeks, I felt कि यार, for those 90 minutes I was watching that football match, I felt like कि हाँ यार, चीजें मतलब ठीक है. For those 90 minutes, nothing, I could keep my tensions, my issues to one side and focus on something else. तो Hmm. and that day I realized कि यार, लोग क्यों बोलते हैं कि फुटबॉल इज एन escape. क्योंकि आप अपनी, you can just for those 90 minutes Personal life को side करके just focus. साइड करके, you are focused on something else, and that is, we don't know यार. People यहाँ पे यूके में, there are people, who are facing all sort of struggles, and for them, it's a big escape. और अभी जब पैंडेमिक में फैंस अलाउड नहीं थे स्टेडियम्स में, Hmm. तो there was a survey that was done in the UK, and बहुत सारे लोग, there was an increase in cases of mental health issues, obviously because pandemic का तो एक reason था ही था. Hmm. और जो उसमें reasons थे कि, people were not able to get the escape, they were not able to go and watch their team, Right. and that was kind of compounding their Hmm. misery in a way. So yeah, that's where, I mean, these two reasons, I feel, yeah, that's where football just Hmm. trumps every other sport, and just becomes a top sport की आपको passion और emotion के हिसाब से. Right, right, right. And sorry to hear about your father. And I can totally understand because in 2016, my father also passed away. So I understand your emotion. So it's good that we come out of it. और अभी हम हमारे life में फिर से track पे हैं. So we're नहीं, good of with course, that. sorry to So hear about your father as well, yeah, Abhishek. thank you. But I when now that you can understand the whole range of emotions one goes through in such an So event, and true. then फिर उसमें. राइट राइट आई अंडरस्टैंड ओके मेरे को ये क्वेश्चन और पूछना था कि बहुत सारे क्लब्स होते हैं और कुछ मैचेस कंट्री के हम्म. होते हैं तो ये डिफरेंसेस क्या रहते हैं क्लब्स के अलग मैचेस एंड वर्ल्ड कप में कंट्रीज होती है बट लोग क्लब्स के लिए आई गेस ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं मैच देखने के लिए तो व्हाट्स द Yeah. डिफरेंस मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ. जैसे ओके अपने यहाँ पे आईपीएल है, तो आईपीएल हम्म में क्या है, सिटीज खेलती हैं, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स और बैंगलोर और सब. तो मतलब राइट 2000 क्लब्स, राइट. करेक्ट और करेक्ट इंडिया खेलती है, तो इंडिया, मतलब यू रिप्रेजेंट हम्म अ कंट्री. तो सेम हम्म फुटबॉल में भी होता है, देयर आर डिफरेंट टूर्नामेंट्स, जैसे कि वर्ल्ड, अगेन अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ, तो जहाँ पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो. ऐसे ही यूरोज होते हैं, विच इज यूरोपियन चैंपियनशिप्स. तो उसमें आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो. तो हर कॉन्टिनेंट का अपना एक टूर्नामेंट होता है. जैसे भी इस साल 2023 में अभी एशियन चैंपियनशिप्स होने आ रही है, एंड वेरी हैप्पी टू से कि इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, इन द मेन नाइस टूर्नामेंट. तो मतलब वी शुड डेफिनेटली ऑल गेट बिहाइंड अवर टीम इन ब्लू, द बॉयज इन ब्लू, एंड जस्ट बैक देम एंड सपोर्ट देम. अभी हमने खूब सारा वर्ल्ड कप देखा है. करेक्ट ऑब्वियसली, उसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं था, बट इसमें हम्म है. तो थ्रू योर चैनल आई वांट टू रियली अपील टू द पीपल कि यार, आप वो भी देखो, सपोर्ट करो, जैसे क्रिकेट में सपोर्ट करते हो इंडिया को, वैसे उसमें करो. और वंडरफुल अपने मतलब, या बॉयज इन ब्लू का हौसला बढ़ाओ, चीयर अप करो यार उनको. बिल्कुल बिल्कुल तो वैसे ही होता है. और लाइकवाइज अलग अलग क्लब्स होते हैं, जैसे अपने आईपीएल में होते हैं वैसे क्लब्स होते हैं. बट फुटबॉल में डिफरेंस क्या होता है कि फुटबॉल में जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं इन विच यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, वो कम होते हैं. जो आपके क्लब हम्म मैचेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं. ओके तो इसलिए फुटबॉल में जो जो फॉलोइंग है वो मतलब ऑब्वियसली क्लब्स की ज्यादा है, क्योंकि क्लब्स, अब जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ क्लब, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, कुछ ये पॉपुलर क्लब्स हैं. हम्म तो अब इनके मैचेस ज्यादा होते हैं एज अपोज टू से से इंग्लैंड और फ्रांस और अर्जेंटीना, ब्राजील, इनके मैचेस कम होते हैं.
But in a tournament like World Cup, matlab everybody is like behind their country, and they are cheering them on, and that's how it is. राइट राइट। और इनमें मैनेजर का रोल क्या रहता है? बिकॉज हर टीम के या हर क्लब के मैनेजर्स होते हैं, तो व्हाट इज द रोल ऑफ दोज मैनेजर्स? ये एक्चुअली यार मैनेजर का बहुत क्रूशियल रोल होता है फुटबॉल में। मतलब अगेन मैं क्रिकेट से कंपेयर करूंगा, क्योंकि अपने यहाँ पे लोगों को क्रिकेट ज्यादा, मतलब ज्यादा हम्म बेटर अंडरस्टैंडिंग है उस गेम की। तो ऐसे क्रिकेट में कैसा होता है कि कोचेस हैं, आपने ट्रेन कर लिया, आपने प्लेयर्स की एक स्ट्रैटेजी बना दी, फिर उसके बाद आप एक बार यू आर ऑन द पिच, आप यू आर इन द ग्राउंड, तो वहां पे जो भी स्ट्रैटेजी होती है वो कैप्टन बनाता है, राइट? किसको बॉल देनी है, किसको कहाँ पे फील्डिंग सेट करनी है, कहाँ पे मतलब जो भी पूरा भी जो अरेंजमेंट होता है, पूरी जो स्ट्रैटेजी होती है, इट इज मोर, कैप्टन इज मोर एक्टिवली इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स कोचेस होते हैं, वो अपना इनपुट देते हैं, बट फुटबॉल में हम्म कैसा होता है ना, द मैनेजर डिसाइड्स एवरीथिंग। मैनेजर ओके इज द बॉस। तो हम्म मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपको कैसे खेलना है, अटैकिंग खेलना है, डिफेंसिव खेलना है, आपको मतलब किस, फुटबॉल में देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स, अटैकिंग पैटर्न्स, डिफेंसिव पैटर्न्स, तो आपको कौन से पैटर्न पे मतलब यू हैव टू प्ले। तो और इवन क्योंकि फुटबॉल में कैसा होता है ना कि मिड गेम भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो आपको ऐसा लग रहा है मैनेजर को कि यार कोई प्लेयर है वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, या मतलब अगर उसने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्टार्ट मिसकैलकुलेट कर दिया है उसने, and the strategy that they have made is not working anymore. So it is like they can improvise mid game, they make substitutions, they change players, they change strategies at time mid game, and it is very interesting. So it is like, it is almost like a battle of chess. कि हम्म दो opposing team के managers हैं, they have come up with a strategy to outwit each other, and then sometimes that strategy does not work and they have to change it mid game. तो इट इज वेरी फैसिनेटिंग। अगर आपकी टीम को कोई अच्छा मैनेजर है, तो इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग टू सी हाउ डिफरेंट मैनेजर्स वर्क एंड हाउ दे ऑपरेट। बट इन फुटबॉल मैनेजर इज द बॉस, हम्म ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, एंड ही कंट्रोल्स द टीम, ही कंट्रोल्स द स्ट्रैटेजी, एंड ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। व्हाट तो अबाउट द सबसे बड़ा फंडिंग? आई मीन मैनेजर्स ही फंड भी करते हैं या फिर फंडिंग के लिए जो स्पॉन्सर्स रहते हैं वही टीम को सपोर्ट करते हैं? फंडिंग के लिए फुटबॉल क्लब्स दे हैव ओनर्स। ओके सो दे हैव ओनर्स लाइक आईपीएल में, अगेन आई गो टू द आईपीएल एग्जांपल। जैसे आईपीएल में हमारे ओनर्स हैं, हम्म मुंबई इंडियंस इज ओन्ड बाय अंबानी ग्रुप, शाहरुख खान ओन्स केकेआर, एंड तो हम्म मतलब लाइकवाइज आप जो क्लब्स होते हैं दे हैव देयर ओनर्स, they have a ओके very much of a corporate structure कि उनका मतलब they have their CEOs, they have their whole departments जो कि स्काउट करते हैं प्लेयर्स को। हम्म बहुत डेटा ड्रिवन हो गया है आजकल। यू लुक फॉर कि हमें किस टाइप का प्लेयर चाहिए, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या उसके good points हैं, and then based on that it is like you bid in IPL. तो likewise you go to a club से, मुझे अगर से मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई क्लब प्लेयर अगर खरीदना है किसी और क्लब से, हम्म so they will go to that player, talk to that player first कि आप हमारे यहाँ आना चाहते हो क्या, हम this is how हम्म we want, this is how we play, this is how you will fit into our team. उसके बाद अगर प्लेयर says okay I'm good, तो then they have to go and negotiate with that club जिसमें कि वो प्लेयर अभी currently खेलता है, and then they have to agree a fees कि okay, the selling club will say कि my player is worth X amount, हम्म and then they have to, the both the clubs will have to agree a fees, और फिर उसके बाद then that whole transfer happens कि the player moves from his current club to his new club. So this whole funding comes from the owners, from the money that the club also makes itself, because football is a global game. तो ट्रू अगर आप बड़े क्लब हो तो आपकी बहुत फॉलोइंग होती है अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारा रेवेन्यू आप जनरेट करते हो बाय सेलिंग योर मर्चेंडाइज, बाय ब्रॉडकास्ट राइट्स। जैसे जो स्पेशली जो बड़े क्लब्स हैं, दे गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम टीवी। तो they use all this revenue plus the funding from the owners to you know to create राइट that team, to create that squad, to creट that everything.
फंड का तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले है. इनफैक्ट आई हर्ड कि मुकेश अंबानी, आई गेस ही इज थिंकिंग टू फंड एनी टीम internationally, so maybe he's going into football as well in future. Yeah, there was some talk about Mukesh Ambani trying to buy a club in the English Premier League, but अभी ऐसा कुछ मतलब that was Officially just नहीं a हुआ है. rumor, हाँ, कुछ हुआ नहीं है. Maybe he will, maybe he won't, but yeah, there was some rumor about it, yes. Hmm. And it will be good. I mean, like यार इंडिया में अभी देखो तो जैसे क्लब्स हैं तो दे आर मोस्टली ओन्ड बाय पीपल फ्रॉम मिडल ईस्ट या पीपल फ्रॉम अमेरिका. Hmm. तो अगर या चाइना का भी बीच में बहुत सारे क्लब्स चाइनीज बिजनेसमैन ने दे ओन देम. सो इट बी ग्रेट यार कि अगर कोई इंडियन बिजनेस टाइकून आकर के दे ओन अ बिग क्लब. It Hmm. will be huge, huge, यार मतलब it will be a something which is a huge, proud Hmm. thing for India कि अगर कोई True. मुकेश अंबानी या टाटाज या somebody like that owns a big club, will be crown jewel यार, crown jewel. एक्चुअली आपने कभी लाइव देखा है फुटबॉल मैच? आई मीन योर एनी फेवरेट क्लब का, या जो आपका फेवरेट प्लेयर है यार उसका? of course मतलब I've been lucky enough in that regard कि मैं यहाँ पर हूँ and I support Manchester United. Hmm. So, in fact, I'm going on 8th Feb again Ah. to watch them live. So yeah, I've seen a lot of matches, been lucky in that regard. Hmm. And yeah, I can't even describe how electric the atmosphere is inside that stadium. I've seen, as I said, Manchester United, so 75,000 fans cheering the Hmm. team on at every second of the match. So it's just goosebumps. Yeah, man. Hmm. Can't you just there are some things you just can't describe in words कि आप वहां पे जाओ and then you experience that whole atmosphere, and it's like there is electricity in that atmosphere is all Hmm. I'll say. And who is your favorite player nowadays? I mean, David Beckham was there, but now who is your favorite one? Mm, yeah, favorite player. Okay, I'll maybe give you the answer. I'll give you two players. So favorite player who plays for Manchester United, that one that I'll give for that, and then a favorite player all over. Okay. So the favorite Okay. player who plays for Manchester United will be Marcus Rashford. He is a Manchester-born kid who has fulfilled his dream of playing for his boyhood club, Manchester Okay. United. So like it's a great story, yaar. Like he is a Manchester born and bred guy or a kid, because he's still only 25. So Hmm. and then so he is with the club since he was 7 years old, and then he's played through all their age groups, and then now Oh. he's finally performing so well for their first team. So it's like it's like every child's dream, yaar. Hmm. So like imagine like you support an IPL team, or you live in Bangalore and you support Bangalore, and then one day you get to play for them and you get to play for them at the biggest stage and do well for them. So it is like that kind of a success story. So Hmm. so I love him. I love that guy to bits. And among the players who don't play for Manchester United, but I really like is Kylian Mbappe. I Ah. mean, you must have seen in the Yeah, World Cup everyone final now. what that guy is all about. I mean, Messi won the World Cup, and I was very happy for him. But I mean, yeah, Kylian Mbappe you have to give it to that guy. Yeah, Seriously. he is just electric, absolutely electric, man. पूरा वर्ल्ड कप आई गेस फाइनल जो है वो उन्हीं ने बनाया है. तो हैट्स ऑफ टू दैट गाय, सीरियसली. Uh, but it ओके. was it was almost a dull affair, yeah, that final, and that guy single-handedly just turned it on its head. Absolutely, man. Astonishing match. Yeah. So, what are your thoughts on Indian football? Because, I mean, Indian football इतना आगे गया नहीं है internationally. Mhm. तो आपके थॉट्स क्या हैं फ्यूचर में, कैसा आप देखते हैं? बिकॉज अभी जब मैं जैसे पुणे के अराउंड कोई ग्राउंड्स वगैरह देखता हूँ, तो आजकल फुटबॉल लोग काफी ज्यादा खेल रहे हैं. मेरे घर के सामने जो ग्राउंड है वहां पे क्रिकेट का भी है, फुटबॉल का भी है, बट मोस्टली लोग फुटबॉल खेलने आते हैं उस ग्राउंड पे.
तो आपको फ्यूचर क्या लगता है इंडियन फुटबॉल का कैसा होगा? यार, आई रियली होप कि इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर ब्राइट हो. एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज फुटबॉल देखो, इट्स अ ग्लोबल स्पोर्ट, राइट? एंड इंडिया, आप इमेजिन करो एन इंडियन टीम प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, एंड होल कंट्री cheering them on. तो मतलब सोच के ही, like it just, you feel like goosebumps, Proud. you can feel your hair raising. So I really hope कि it is the future of Indian football is wonderful. But वो अपने आप नहीं होगा. So we have to, everybody will have a role to play in it. We as fans, the authorities, Football Federation of India. इनफैक्ट अभी अगर तुमने सुना हो तो द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज कम अप विद अ न्यू रोड मैप, कि जहां पर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एट द ग्रास रूट लेवल Nice. टू क्रिएट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टू प्रोवाइड better facilities for young players, so that maybe in 5, not 5, maybe 10, 12, 15 years time, you can see, you can hope to see India participating in World Cup. जीतना तो यार मतलब it's like it's a dream, but Right. if we at least get there, participate there, that will be a big thing. मतलब Actually. absolutely it will be a big thing. तो उस चीज के लिए the efforts are already underway, which is good. बट सिर्फ अथॉरिटीज भी कुछ नहीं कर सकती यार. मतलब इट इज, कैसे बोलते हैं कि एज फैंस वी नीड टू सपोर्ट द टीम. वी नीड टू, एज पेरेंट्स या एज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रन, वी नीड टू encourage them to take up the sport. और दूसरी चीज ये भी है कि यार there has to be some sort of a what do you call, there has to be some sort of a benefit, like कि आप जैसे क्रिकेट आप खेलते हो, आजकल लोग हैं तो they encourage their kids to play sports, play cricket especially. जब हम लोग छोटे थे तो आईपीएल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था. सिर्फ एक आपकी अगर या तो आप रणजी खेल लो स्टेट लेवल पे तो खेल लो, नहीं तो फिर टीम इंडिया तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज होती थी. आज भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मतलब उतना बीच का एक आईपीएल नहीं था, राइट? तो बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ हु आर वेरी गुड एट क्रिकेट, बट दे कुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज यार दे कुड नॉट मेक इट देयर career, because either they were not at that level, they were very good, but maybe the level, the cut to get selected for your state team or for the Indian team was just too high. तो लोग मतलब उनके पेरेंट्स भी डिस्करेज करते थे कि यार क्या फायदा है इसमें, कुछ होना नहीं है. बट नाउ अभी आप देखो आईपीएल है, देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज इन द आईपीएल, पीपल हु आर मेकिंग गुड मनी. Actually. तो and a lot of people, if you do well in IPL, you always, you also get a shout for the Indian team. लोग आपका नाम जानते हैं, you become a household name. So the business of playing cricket has become so lucrative कि अभी ना आपके पेरेंट्स भी दे आर लाइक कि हाँ अगर हमारा लड़का अच्छा कर गया तो देयर इज अ फ्यूचर, देयर क्रिकेट में. Correct. अभी देखो बैडमिंटन में वी हैव हैड सक्सेस स्टोरीज, राइट? साइना, पीवी सिंधु, पारुपल्ली कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत, अक्रॉस बोथ मेंस एंड वुमेन्स Men's and सेगमेंट. women's, yeah. तो अभी पेरेंट्स दे आर नॉट दैट रिलक्टेंट कि अगर उनका बच्चा कल को बोलता है आई वांट टू परस्यू बैडमिंटन, so they are not that reluctant, because they have seen success stories, and they realize कि if their kid is good, there is a future for them. तो ऐसा ही कुछ ना we have to create for football. Right. ISL है, ISL में again clubs हैं, which is they're trying to build up that league. उसको और थोड़ा सा मार्केटाइज करना पड़ेगा, और उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा Promote भी करना पड़ेगा. प्रमोट करना पड़ेगा. यू हैव टू मेक इट अ लुक्रेटिव प्रोपोजिशन, सो दैट अगर कल को कोई बच्चा बोलता है अपने पेरेंट्स से कि यार आई वांट टू प्ले फुटबॉल, तो उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन उसको डिस्करेज नहीं करेंगे कि Correct. यार फुटबॉल क्या करेगा खेल के, क्रिकेट खेल लेना या बैडमिंटन खेल लेना. तो वो नहीं होना चाहिए. Right. तो बहुत सारी चीजें यार ना, दे नीड टू कम टुगेदर फॉर इंडियन फुटबॉल टू गो टू द नेक्स्ट लेवल.
तो everybody has a role to play in it. The authorities have a role to play in it by creating the right infrastructure, by ensuring कि ना grassroots पे लोगों के पास वो facilities हों कि अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो खेल पाएं. प्लस जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो मतलब the people in power, they need to make football a lucrative proposition, कि so that आपके पास वो लोग हों जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो उसका फायदा उठाने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना यार. आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया बट अगर कोई उसको यूज ही नहीं कर रहा है तो उसका फायदा क्या है. तो वो भी होना चाहिए. एंड देन वंस यू डू ऑल दैट देन यू होप कि यार कोई एक सक्सेस स्टोरी आपकी हो जाए. सम इंडियन प्लेयर प्लेज इन अ बिग यूरोपियन लीग, plays in England, Indian team does well. You get those heroes, right? You get those sporting heroes कि नहीं यार, मतलब बच्चा बोले कि नहीं यार मुझे ना ऐसा बनना है, आई वांट टू बी लाइक हिम. अभी आज हर बच्चे को विराट कोहली बनना है, राइट? राइट. हर कोई जो बैडमिंटन खेलता है उसको साइना नेहवाल, पीवी सिंधु बनना है. तो ऐसा ही अगर कोई फुटबॉल में भी हमारे पास सक्सेस स्टोरी हो कि बच्चा बोले नहीं यार ना मुझे तो सुनील छेत्री बनना है या मुझे तो बच्चन भूटिया बनना है, उस लेवल पे ये प्लेयर्स हैं. बट यार अगेन अगर आप फुटबॉल नहीं फॉलो करते हो तो कितने लोग जानते होंगे यार, नहीं जानते हैं ना. एक्चुअली तो यू नीड अ सक्सेस स्टोरी. एंड once these three things come together now, boss, you see Indian football, it will just go to the next level, and it will be just so beautiful, and I really hope it happens. Yeah, I really hope it happens. गुड इनिशिएटिव बाय इंडियन टीम. ग्रासरूट लेवल से सब कुछ सिखाना, सब करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना. हाँ मैन, वंडरफुल इन्फॉर्मेशन. सीरियसली मैंने इतना फुटबॉल के बारे में कभी नहीं सीखा, ना किसी के साथ बात की है. सो आकाश, थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल थॉट्स ऑन दिस पॉडकास्ट. और सी यू सून. आई मीन स्कॉटलैंड, इंडिया, वैसे तो पता नहीं कभी कैसा होगा, बट डेफिनेटली मेरा कभी अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा फुटबॉल रिलेटेड तो डेफिनेटली आई एम गोना इनवाइट यू. Absolutely, pleasure is all mine, and it was great catching up with you as well, yaar. Same here. And next time I'm in Pune, I'll definitely make it a point to get in touch with you, and we'll go out for a beer or two. If you're still into that is. I am. Good then. So we'll catch up. And yeah, thank you for having me on your channel. And जैसा कि होता है हर उसमें, please like, share and subscribe. Thank you for that. So viewers, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज यहाँ पे बात पर ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहे हैं आकाश यहाँ पे. Please, yeah, all I can say is I've known Abhishek for some time now. He's a wonderful boy, and he's trying to do trying to create this channel. Please support him. Please, if you like his content, if you like this podcast, please like it, please share it, please subscribe to his channel. Thank you so much, Akash. Have a good one, man. You too. Bye. Bye. What a legend, आकाश खरे. I mean, कितनी नॉलेज दी है उनने फुटबॉल के बारे में हमें, और कितना ही उनको नॉलेज है फुटबॉल के बारे में. उन्हें रात भर जग के मैचेस देखे हैं और कितना ही कुछ फुटबॉल रिलेटेड सीखा है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इससे टेक अवे हुई होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल and follow my Instagram account podcaster_Abhishek. Thank you.